All right, everyone. We are live. So there you go. We are live. I think we are live. Do you think we are live? If you think we are live, then press A. We are live. Okay. I think we are live. Okay. Perfect. You guys can hear me. That's how it's supposed to be. I hope you guys can hear me. If you're here, like the stream, make sure that you let me know that you're here so that I know that you're here. It's too much of that. Just for information, what we have been trying to achieve during the streams, every link will be here, repo link and playlist in the description down below. So please go ahead and check it out. If you go and click on the repo link, you will see this link. Make sure that you start this repo if you like the work. Be a bit appreciative about others, right? And yeah, that goes without saying. Please subscribe if you're new. And if you're old and if you have not subscribed, then you know what to do, right? Just hit the subscribe button. All right, so we have the playlist in the description as well, what we have been trying to achieve, right? Atul has gone to sleep. I don't think Mohit will come anytime sooner. He's busy. So, or maybe he doesn't know that I'm streaming now. So yeah, that makes sense. So yeah, two of my buddies are not here. I'm gonna miss them both. But yeah, that is how it is. So let's start working. Today, what I wanted to do was try to integrate everything with Electron JS. So we had the auto generated HTML ready. That means that we have the home page ready at least, right? So we are getting there, right? It's not that we have achieved everything we wanted to, but yeah, it's some progress. So we can be happy about it, right? We can smile, and we can all agree that things have been looking good so far. So let me quickly give you the demo, and then we can go ahead, right? That sounds good to everyone. Perfect. Okay. All right, so let's go. So we J streams. By the way, I wanted to do a stream about my setup, right? The new Vim setup and everything. I think a stream will not be the best idea for that. Maybe a video will be better. So I will do that, right? Let me quickly go and set -g status off. Yeah, there you go. I don't need to see the status bar right now. I think I kind of know what's going on, right? So it's all good. Okay, right. So we are here. Do we have any diff? No, right? GD, no. GAP, no. Okay, perfect. So what we wanted to do, like what we have done so far, let's see that, right? So if I auto generate my HTML and if I do Google Chrome index.html, so this is what we have, right? Those who are active are colored with this color, green color. Wow, this is green. I didn't know. This looks like yellow to me, to be honest. Guys, is it green? Damn, bro, my whole life was a lie. And this Mohit Wankhede, Mazhar Rajani, and AK614, those who were not live, have their background and the whole card kind of on a darker side. So that's something that is good, right? Um, yeah, that's it. So let's go ahead and start working. And you can see whoever will be live ever will have this overlay on their profile pic, right? Which mentions that they are live. So this is really good, right? We are getting there. Now what do we want to do, right? Like you see here, they have this live written over here, right? 1.5k watching Republic Bharat. Yeah, I think that will be good, right? We also want to show how many people are watching them, right? So let's have a todos.md, right? For the data we receive from the YouTube API, right? How many watching, 2k watching, etc., right? So that will be cool, okay? Because that's something we want to do. If they have not, it will be how many views did they get and how many days ago was it live streamed. So we can do, if not live streaming, show 5.54 million views and a dot and 7 days ago. That will be cool, right? That's like simply matching whatever YouTube shows you that, right? So I think that's a good idea. Yeah. Okay, just a minute, guys. Okay. I need to use my earphone. Okay. All right. So today, let's try to integrate everything with Electron now, and then we will go ahead. Okay. Right. I'll have to open DC, guys. 1 minute. Okay, not here. Let's not do it on the main screen.
There are things that I cannot show all of you, right? There will always be a thing. Okay. Let's go. I could have also made an announcement, to be honest. Okay. Just a minute, guys. Yeah. हेलो. हाँ परफेक्ट है, माइक की सेटिंग्स बिल्कुल सही है. नाइस. बहुत ही सही है भाई. मच बेटर, मच मच बेटर. बहुत सही है सीरियसली. एको हो रहा है. मैं इस लाइव स्ट्रीम पे हूँ बाय द वे. मैं तेरा माइक ऑन कर रहा हूँ सबके लिए, ठीक है? तो सब सुन पाएंगे. ऑल द बेस्ट. क्यों भाई, ऐसा क्यों मेरे साथ में मुझे बुली क्यों कर रहे हो? कर दिया, लेकिन तेरी आवाज़ ना थोड़ी ज़्यादा है, तो आई थिंक गेन रिड्यूस कर सकता है थोड़ा. अच्छा, ज्यादा आ रही है? अभी हाँ. अभी से है? अभी? रुक. हाँ मुझे हाँ सही है, मतलब मैं ओबीएस पे देख रहा. अभी कुछ हाँ, बोल. हेलो हेलो। हाँ परफेक्ट है, अभी बेटर है. यस मच बेटर. सही है। ये कौन है डीसी पे? अतुल पूछ रहा है. अब मोहित है भाई. नया माइक लिया है भाई साहब ने. अब स्ट्रीम करेंगे शराब मेरे भाई. अतुल। It's crazy, crazy, crazy till you see the sun. And tonight, live while you're young. यार आज पढ़ने का मन नहीं हो रहा अतुल मेरा. तेरा तो आज आज क्या चालू? अच्छा, आज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, या सही है। आज कर देते हैं, ऐप में डाल देते हैं एचटीएमएल को. सोच रहा हूँ फुल अमीरी वैनम. जितना मैं मोहित को जानता हूँ, उसके पास बहुत सारे पैसे भी होंगे तो भी वो महंगा माइक नहीं खरीदेगा. हाँ हाँ हाँ। हील भी लाइक, हाँ सेल का वेट करते हैं मस्त सा कोई. वेट करते हैं यार. अरे यार. कैमरे का सेटिंग करके लिया क्या कल? हाँ मतलब अतुल से तो नहीं हुआ. अतुल को नहीं आता ये सब, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया. तो मैंने अपनी लॉजिक लगाए और मैंने सारे ऑप्शंस ट्राई किए, उनमें से एक काम कर गया. नहीं बेसिकली अतुल ने ट्राई किया था, बट वो बोल रहा था मेरे वाले में 720p और 60 fps अलाउड नहीं है, लाइक वर्किंग नहीं है. तो आई थिंक अतुल मुझे कैमरा गिफ्ट करेगा नया, एंड देन वी विल यूज़ दैट. इसमें बस मैंने सिर्फ है ना माइक के अंदर से आरटीएक्स वॉइस चालू करके रखा है बस। RTX वाइज सही है. हाँ सही है. तेरे पास कौन सा GPU है? मेरे पास में 1060। 1060 है ना? ठीक है. यस। 2060 ले ले अब, इजी. गॉड. तो आज हाँ, क्या लाओ करेंगे? पैसे लो। तुरंत ले लेता हूँ अभी भाई, अब भी ले लूंगा। ऐसे रुला मत यार मुझे. अपना लैपटॉप के लिए कंफ्यूज हो रहा हूँ. रशिया और यूक्रेन को बोलो भाई युद्ध ना लड़ें. हो गया. बस. हो गए लोग फायर बहुत. इलेक्ट्रॉन जेएस npm इंस्टॉल -g इलेक्ट्रॉन करो एक तो बैठ के. या by the way guys, if you don't know, like Microsoft Teams, Twitch, Facebook Messenger, Visual Studio Code, everything is written in Electron, right? So it's fairly nice. Sorry. So आज हम लोग क्या करेंगे? We'll try to install everything, get started. चलो ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का क्विक स्टार्ट ऐप देख लेते हैं. या ब्रो, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट अतुल. टेक केयर यार. स्लीप वेल माय फ्रेंड. गुड नाइट क्यों भाई? सोने जा रहा है भाई हमारा. अरे शिव फ्लैश वाई यार. यस यस यस, इवन आई रिमेंबर फ्रॉम योर नेम यार, शिव मैनन. मुझे पता नहीं मैं कैसे याद रखता हूँ, लाइक ये मैं कभी कभी नाम भूल जाता हूँ, बट आई रिमेंबर योर नेम. वो सोने जा रहा है ब्रो, थक गया वो तो. रात भर कुछ ओके। काम किया है ऐसे रात। वो. मतलब और ये तो। भाई मेरी मम्मी स्क्रीन देख रही है. मम. नमस्ते आंटी। जी जी भाई आंटी, ऐसे. माइक की क्वालिटी कैसी लगी आपको? यार कीबोर्ड का आवाज तो नहीं आ रहा ना पीछे नहीं बिल्कुल नहीं ज्यादा? आ रहा. नहीं. व्हाट्सअप शिव. ये हाउ आर यू ब्रदर? यार अपने 1000 2000 दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करें. और मोहित सर, आपके 4000 जो फॉलोअर्स है ना इंस्टाग्राम पे, ठीक है, उनको हम्म। आप आदेश दीजिए. अरे बिल्कुल, अभी लो। मेरे को पोस्ट तो बना के दो पहले बार। क्या पोस्ट ये तो बना के काम दूँ? करना पड़ेगा ना आपको। ऐसे ये मैं करूँ? हाँ। वाह. तो फिर यूट्यूबर किस काम का मैं?
एक टीम रख लो भाई पूरी यूट्यूब की। रखी थी ना, याद है क्या थंबनेल। फालतू हुआ था। अरे हाँ। या आ, बरोबर। नेवर डू दैट मिस्टेक अगेन। बेबी सिटिंग करते रहो सबकी, और कुछ नहीं। अ, मुझे ज़्यादा बोल दिया। वेल द गुड थिंग इज़ नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वॉच दिस स्ट्रीम, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, चलता है। ठीक है। अच्छा, by the way, so this is how it looks like, right? If I do npm install and npm start, it just starts an app which is basically the like renders html, right? Hello world, we're using node.js, chromium and electron this version, right? uh, so yeah, what we can do is we can replace this html with our html and then see how it works. A simple uh, replace will work here. So crazy, crazy, crazy till you see the sun. And tonight I'll live while you're young. See, there you go. So this time this app shows you the HTML, right? It's as easy as it can get. So all you have to do is like whenever you are creating this Electron app, have those HTML templates ready, and then you are like partially done with whatever you wanted, right? So this will give us the freedom whenever this npm install and npm quick start starts. Let's try to do a bit like, let's try to go ahead and do something like package.json. Whenever you do npm start, you do electron dot, instead of before that you do python 3 auto generate.py. Wait a minute guys, और आज से काम चालू मोहित? हाँ, स्प्रिंट एंड हो रहा है मेरा, तो चेक इन वेक इन का काम कर रहा हूँ अभी। वाओ, इस तेरी अरे इतना आवाज। घटिया है ना ये VS कोड। ट्रू, ट्रू। फाइनली कोई तो माना। आज क्या पसंद नहीं अरे आया हो वीएस ही कोड? नहीं रहा, लोड ही नहीं हो रहा है। क्या ओ, VS कोड में? हाँ। अरे मुझे है ना, ये मेरा चेक इन करने का है मेरे मेन ब्रांच में। ओके। तो उसके लिए उसका लेटेस्ट लेना पड़ेगा, तो लेटेस्ट लेने के लिए भी बहुत माथाफोड़ी है। अभी मेरा पासवर्ड रीसेट हुआ था लास्ट सैटरडे को। ओ बाप रे। तो अभी वो लॉगिन ही नहीं हो रहा, कनेक्ट ही नहीं करने दे रहा मुझे मेरी मेन ब्रांच से। डैम। हाँ, दर्द है भाई सब, मुंह में है। बहुत कुछ मुंह में आया भाई। अरे सही Tonight, लगा, मेरे को काफी मजा आया इसमें। इस ऐप में ना। हाँ, या मुझे भी है। मैंने नहीं सोचा था ऐसा कि भाई पाइथन के साथ में भी कर सकते हैं ऐसा, या है ऑटो ना। जन। अरे अभी इसको रस्ट में कन्वर्ट करेंगे, बस ये बार इलेक्ट्रॉन में मैं अच्छे से इंटीग्रेट कर लूँ इसको, देन इट विल लुक रियली गुड। बरोबर। एक तो टैग्स डालना है। आई थिंक आई मेक अ रियली बैड क्रिएटिव पर्सन, लाइक इसलिए मैं ना इतना शुरू में फ्रंट एंड में कभी नहीं जा सकता। समझ में ही नहीं आता है भाई, इसका कलर क्या होना चाहिए? अरे डाल दो यार, छोड़ो ये सब, छोड़ो जो कल क्या फ्रंट एंड था। जो डिजाइन करता है वही काम उन्हीं पे छोड़ देने का, अपने यस, को नहीं दिमाग लगा। एग्जैक्टली। अरे वो लोग एक्चुअल में क्रिएटिव होते हैं, यानी या इतना वेबसाइट और ये सब देखा रहता है ना उन लोगों ने। या मैं तो इतना देखा भी नहीं, कभी सोचता भी नहीं हो, लोग वो एनिमेशन नोट करके रखते हैं, ओ वाओ ये सही है। हाँ, यस यस एक यस यस, ये बात तो है। यस, ये बात तो है। क्या बात है? So crazy, crazy, crazy till you see the sun. And tonight, live while you're young. भाई प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा बताओ आप। अरे हाय निखिल यार, डेफिनेटली यार, सॉरी सॉरी सॉरी, लेट मी टेल यू व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। ठीक है, मैं बहुत खो गया था यार। So देखो, the whole target of this stream was like, this whole stream playlist was two things, right? So कभी कभी you have your favorite YouTubers and you want to monitor कि like whether they are live right now or not, whether they are like कितनी watching है, कितने number of views हैं, कब live थे last time, all these things, right? So अभी what you have to do, like you have to open YouTube, you have to go and see कि अच्छा यहाँ पे ये लोग live है, left में दिखाता है right कि these people are live, या फिर you get the notification। अब not necessarily you will want to you might have like ऐसे turned on the bell icon and all, right? तो and कभी कभी YouTube does behave like weirdly, so it doesn't show you the live notification as well, ठीक है?
So what we wanted to build is something which enables you कि जहाँ पे you can select your favorite YouTubers. You can select 5, 6, 7, 8, 9, maximum 10. I think that's how much we'll support for now. उसके बाद you will have an app जिसमें whenever you open you will see उनके live status के बारे में, ठीक है, like whether they are live right now, कब live थे last time, कितने number of views हैं, कितनी number of watching है, ठीक है, and then a graph of how many times that the person was live, right, and the like links to all the live sessions before, right, all these important things that you ever need from a YouTuber, right. So it's, I think it's maybe it's not required, but हमारे like हमारा stream का target ये था to understand how we can auto generate the HTML, right. So the most important thing is like suppose you say कि like मेरा एक क्वेश्चन था, ठीक है, a lot of things are done by JavaScript, but suppose तुमने एक नए यूट्यूबर को सिलेक्ट किया, ठीक है, अब HTML में of course you will have to add another container, right, another section for that यूट्यूबर कि हाँ भाई ये यूट्यूबर ऐड हुआ है, तो how should I do that. अब क्या है ना, हम लाइक आई एम अ रिसर्च इंजीनियर, तो मेरी जॉब में लाइक वी ऑटो जनरेट अ लॉट ऑफ कोड, ठीक है, दैट मीन्स कि हम लोग सोच के रखते हैं कि अच्छा हाँ यार ये अगर इनपुट आ रहा है तो ये कोड जाना चाहिए, तो वी ऑटो जनरेट दैट पार्ट ऑफ कोड. तो आई वांटेड टू ऑटो जनरेट द HTML कोड, सो दैट मीन्स कि हमने क्या किया है, विथ लाइक ऑल द डेटा दैट वी विल एवर नीड इज इन लिस्ट यूजर्स डॉट जेसन. तो यहाँ पे मैंने एक रैंडम सैम्पल डेटा कलेक्ट किया है जहाँ पे हर यूज़र नेम के करस्पॉन्डिंग नेम है, उसका एवतार लिंक है, डिस्क्रिप्शन है, वेदर ही इज़ लाइव और नॉट, लास्ट लाइव कब था, सब्सक्राइबर्स कितने हैं. सो मैंने ये डेटा जेसन फाइल में स्टोर किया है, ठीक है. नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना लोड दिस जेसन इन अ पाइथन फाइल, ओके, एंड आई एम गोना प्रोसेस द होल HTML यूजिंग दिस. तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ऑटो जनरेट डिव कर रहा हूँ, तो डेटा को लोड कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ वेदर द पर्सन इज़ लाइव और नॉट, देन उसकी कुछ क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि हाँ भाई उसको ये क्लास देनी है, उसको वो क्लास देनी है. देन आई हैव जस्ट div template डॉट फॉर्मेट, बेसिकली मतलब मैंने HTML को रेडी किया है, ठीक है. सो इफ़ आई जनरेट, सो लेट मी शो यू द जनरेटेड HTML कोड. सो हेड तक तो पूरा हार्ड कोडेड है, राइट. सो हेड तक तो सब कुछ एवरीथिंग विल बी सेम. ये जो बॉडी आई है, बॉडी से लेके नीचे तक ये सब कुछ ऑटो जनरेट हुआ है. सो एज यू कैन सी यहाँ पे कुशाश रवि श्रीमाली के लिए एक सेक्शन आ चुका है, मोहित वानखेड़े के लिए एक आ चुका है, अतुल कुमार के लिए एक आ गया है. सो दैट इज़ हाउ इट इज़ जनरेटेड. सो इफ़ लेट्स से निखिल, इफ़ यू आर स्टिल हियर, if let me add a section for you and then you will see कि अपने आप तुम्हारे लिए सेक्शन डाउन लाइक नीचे आ जाएगा, ठीक है. सो आई एम गोना कॉपी AK614 का इन्फॉर्मेशन, आई एम गोना पेस्ट इट हियर, राइट, एंड आई एम गोना गो टू Nikhil, are you here by the way? Or did you like, ठीक है, this is something that doesn't interest me. So let me put your username as Nikhil Pandey and name as Nikhil Pandey. Let's put you as is live as true, maybe. Let's say you're true. Last live doesn't matter here. Subscribers, let's say, I'm going to give you a lot of subscribers, okay? So I don't know how many zeros are there. So I'm going to give you a lot of subscribers, okay? Now this is your data, ठीक है, perfect, you're still here, ठीक है. तो देखो, तो I have added your data in the JSON file, okay? Now you see the magic. Let me show you the, wait, मैंने close तो किया सब कुछ. Yeah, I think it's all, wait a minute, yeah, this is all good. Okay, now you see what I'm gonna do. ठीक है. So if I show you the index.html and if I go to the bottom, you will see last किसका था, AK614. It doesn't contain your data, ठीक है, that is clear. It does not contain Nikhil Pandey yet, ठीक है. And like let me show you how it looks like, right? So this is how it looks like अभी के लिए. कुशाश विश्माली इज लाइव, सो उसका कलर ग्रीन हो रखा है पूरे कार्ड का, ऊपर एक लाइव बटन आ रखा है. मोहित वानखड़े इज़ नॉट लाइव, अतुल कुमार इज़ लाइव, मजहर रजानी इज़ नॉट लाइव, यथार्थ इज़ लाइव, AK614 इज़ नॉट लाइव. तो यहाँ पे दिखते से ही पता लग रहा है कि कौन लाइव है कौन नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी निखिल पांडे नहीं आया है, ठीक है. आइडियली लोग क्या करते हैं, ऑफकोर्स दे विल यूज़ सम जावास्क्रिप्ट एंड ऑल, ठीक है, वो अलग बात है. अब मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोना रन माई स्क्रिप्ट python 3 auto generate html.py, राइट. आई एम गोना क्लिक एंटर, ओके, वेट इट, sorry, I think I missed something here. Probably I missed the closing. Okay, what did I miss here? Maybe, yeah, there you go. So मैंने एक closing brace मिस कर दिया था. So as you can see यहाँ पे auto generate हो गया HTML code. Okay, now if I go to index.html file, okay, and if I go to the bottom, you will see Nikhil Pandey comes up. ठीक है, AK614 इज अबव निखिल पांडे, निखिल पांडे यहाँ पे आ चुका है. कॉन्ग्रेचुलेशंस, दैट मीन्स योर एंट्री हैज़ बीन एडेड. एंड नाउ इफ आई ट्राई टू गो एंड डू गूगल क्रोम index.html, there you go, there you see yourself,
सो निखिल पांडे कम्स अप एंड उसके ऊपर एक लाइव ओवरले भी है, उसका कलर भी ग्रीन है बिकॉज यू आर लाइव. तो हमने जेसन फाइल में अलग से बोला था कि निखिल इज लाइव. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट. तो ऑटो जनरेटिंग इज लाइक रियली गुड फॉर आवर यूज केस हियर. सो डू यू अंडरस्टैंड हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, राइट. So this is what we have accomplished so far. Okay, do you like it? Do you understand कि कितना interesting है ये चीज़? Yes or no? Let's see. I think it's your first time as well on stream, right? Let me see. Yeah, it's your first time. You just subscribed. Thank you so much, by the way, for subscribing. How can we learn? Um, just watch. Just keep watching. Ask questions if you have any. Like यार मतलब when we started, right, like देखो, doing a BTech in computer science gives you a lot of confidence, right, about everything. उसके बाद all you have to do is we have to just look at people how they are doing it या फिर look at some examples and then try and do it. That's it. ठीक है. तो जैसे हम कर रहे हैं अभी, तो मैं पता लग गया कि अच्छा हम लाइक यू नो ऑटो जनरेट कर सकते हैं HTML. तो तुम कुछ नया ही सीखोगे, राइट. ऐसा तो है नहीं कि दैट यू विल गो एंड लाइक गो विदाउट लर्निंग एनीथिंग न्यू. या मेक श्योर टू लाइक या प्लीज़. एंड येस, एक और रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर ऑन गिटहब प्लीज़ मेक श्योर दैट यू स्टार द रेपो. ठीक है. दिस इज द रेपो दैट आई एम वर्किंग ऑन. प्लीज़ गो एहेड एंड यहाँ पे क्लिक द स्टार बटन. ओके, दैट दैट इज समथिंग दैट आई विल अप्रिशिएट. पाइथन यूज़ करते हैं अभी तो ऑटो जनरेट के लिए, एंड देन वी हैव HTML फॉर द फ्रंट एंड, CSS फॉर स्टाइलिंग, JavaScript will be required. So 3 4 around 4, but I think you'll survive with 3. So it should be all good. और अभी इतना मत सोचो यार कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है. एवरीथिंग इज़ इंग्लिश. थिंग इज जस्ट कुछ नहीं है, सब अंग्रेज़ों का काम है, कोई दिक्कत नहीं है. एनीवेज लेट मी सी. आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग हियर. ये npm इंस्टॉल काम क्यों नहीं कर रहा है. JSON failed. Okay, it's not able to parse. That means it doesn't allow python3 autogenerate.py. क्यों भाई इसमें एंड. अच्छा मे बी आई जस्ट ओके. क्या गलत हो रहा है यार. python3 autogenerate html.py and electron dot. Why does it not work? Let me see if I just remove it. Will it work? Okay, it doesn't work. That is good. Okay, ठीक है. Maybe that means I have made some mistake anywhere else. This is good. This is good. This is good. Maybe they are not expecting a comma at the end. Yeah, there you go, right. So एक comma extra मैंने डाल दिया था. I can just remove it, get rid of it, and that will be all good. ठीक है. Now as you can see मैंने अपने ऐप को स्टार्ट करने की कोशिश की है, and you will see जब ऐप स्टार्ट होगा तो ऐप में वो दिखाएगा index.html पूरा. So let's wait for it to load. Takes quite a lot of time I guess इंस्टॉल करने के लिए, या फिर कुछ मैंने या ओके ऑल गुड. ठीक है. सो लाइक लेट मी शो यू द ऐप. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ठीक है. सो ये ऐप वर्क कर रहा है. दैट मीन्स वी हैव द डेटा इन द इलेक्ट्रॉन ऐप. अब क्या करेंगे, लेट्स पुट द ऑटो जनरेट कोड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट. सो वेन एवर द ऐप इज स्टार्टेड आई वॉन्ट कि उससे पहले ऑटो जनरेट HTML.py रन हो, राइट. उससे क्या होगा, that you will get the latest HTML every time you do this. ठीक है. And that's it. खत्म. Easy. There you go. See? Yeah. Perfect, right? So suppose, for example, in my list users.json, if I go and put is live, I think I want to go to the last okay, and yeah. Here, if I want to make you, like suppose you are offline now, so this time I have put is live as false for Nikhil Pandey. So what will happen now if I start the app again, you see that this time it will not show Nikhil Pandey is in green. This is great, right? This is getting updated, but this is not the best way because this is not real time, right? Suppose your data has changed while you have opened this app. Now this app will not change. What we want is we want to refresh it every 1 second, every 2 seconds, or whenever there is a change in index. Yeah, we can do that. Yeah, so we can monitor the changes in the list users.json, and whenever there is a change in the data, we will refresh the auto-generate script. Yeah, we can do that. So we need to write a monitoring script
which keeps monitoring, like which monitors this whole. Okay, we can do that. So that now that comes as a JavaScript part, right? Okay, so I'm gonna put the chat on thoda aise. I think this is better, right? So that I can see all. Okay, perfect. Okay, so what I want to do now is I want to see main.js file. Here we have function create window, new browser window with, okay, this is all good for now. Preload.js, okay. Load file index.html, yes, that's what we want to load right now. Whenever this is activated, app when ready, then create window, app.on, activate. On macOS it's common to recreate a window in the app when the dock icon is clicked and there are no other windows open, okay. That's just for macOS, I guess. Now quit when all windows are closed, okay. I've done Electron before, right? तो like ऐसा नहीं है कि I'm a total noob in this, but I'm not close to an expert as well. I would call myself a learner with due respect. Okay, now what we want to do, whenever it is ready, so we will have to see what functions we have. Emitted when Chrome's accessibility support changes. No, this is not what we want. No. Adds a one-time listener. No, we don't want one-time listener, please. Can we get something which always runs, like listeners बना सकते हैं क्या? Yeah, we can just start a server in the background and we can say just keep listening to this server whenever you listen to something which says that, hey, yeah, you are ready, so we can use that. Okay, let's keep going. Maybe we'll find something. Add listener is one thing. Yeah, okay, I'll keep this in mind. That's an option. Okay. Get batch count. What does it do? Counter batch. Okay, not necessary. Is Unity running? No. Remove listener. Okay, we have that as well. Show about panel. Application menu. We don't want to play around with that right now. I think it's good to just have a listener here, but let's see how does a listener work, right? We'll have to do add listener. Okay. Event. Accessibility support changed. So an example of event will be that. So when do you want to add a listener? Okay. देखना पड़ेगा यार ये थोड़ा देखते हैं ठीक है एक बार नेट पे सर्च करते हैं how we can do that and then we will go forward and do it. Okay, so let's go and see Electron JS start background listener, right? We can do that. Let me bring it to how to run a background service in Electron JS. Yeah, okay, Electron is not designed to run in background. If you're closing application, then it will terminate all processes related with it. Yeah, that's all good. Okay, if you write a service with something else, say a node on that application, then you can probably could use Electron to interact with that service. Okay, reflink. No, this is not what I want. You can use trays, and here is an example. No, this is not what I want. This is something else, right? ये क्या हो गया है इसको? How to run background worker process in Electron app. When you're building an Electron app, you will sooner or later have to integrate some longer running or heavier tasks that take up large amounts of resources. Yeah, exactly. Right. So what I want to do is I want to run something in background which monitors the list users.json. Using web workers or using additional hidden renderers, both solutions will offload your task into separate process, but each one of them is suited for a specific scenario. So using web workers have already been around for a while and are fully supported by Chromium. As Electron is built on top of Chromium, you can of course use web workers in Electron too, but you are bound to the same restrictions as a normal browser. Web workers do not have access to renders DOM, so you cannot perform any kind of UI manipulation with them. Okay. Interesting. This is something I'll take a note of. Web workers should not be used for long running tasks like server processes, but are best suited for offloading heavy calculations from the render processes. Okay. See, are not suited for long running tasks like server processes, but are suited for like jahan pe heavy calculation ho rahi hai, you can just render them in the background. Additionally, web workers cannot use Electron's Node.js integration. Means, for example, you do not have access to local resources like the file system. Now, this is totally a turn off for me. Okay.
But how are they doing it, right? First, I'm going to install an additional module called Promise Worker. This is technically not required, but it's a great way to make your life easier as it wraps the whole request or response communication process into convenient promises. Okay, npm install hyphen save. Okay, it will save it to package.json, I guess. And then we have Promise Worker, right? And then we have next, this is a directory and file structure I'm using. Okay, all of my workers reside in a folder called workers. The actual implementation is split into two files, one called index.js, which contains the inference, which contains the interface, and the other one called worker.js, which contains the actual implementation. Okay, it's pretty much the same concept as .h and .m files in C++ or Objective-C. Yeah, header files. Okay, okay. So one of them has the interface, the other one has implementation. Import promise worker from promise worker, import worker from worker loader dot worker, worker बनाया, new promise worker बनाया, get primes post message कर रहे हैं, type get primes message amount, export default किया. This is not much. Yeah, first we create an instance of promise worker, then create and export the stub of a function called get primes. Okay, register promise worker. Okay, okay. So if the type of the incoming message is get primes message, and then we retrieve the amount and we return that as a JSON serialized string or something like that, right? So JSON.parse, yeah, makes sense. This is how they retrieve the data. Okay, right, now let's look at this. So ideally what I want to do is, yeah, now I'm thinking about it, right? Now I'm thinking, now we are talking actually, because you want to call the Python script which monitors, but you don't need to call the Python script. You can just monitor it in JavaScript, right? Because you will have JSON.parse, so all is good there. Can we do that? Yeah, we can do that. So we can shift to more JavaScript. But the reason I was doing it more in Python is because I don't want it to be an Electron app later on. I want it to be a Rust app. Okay, spoilers. So इसलिए I was not pushing everything towards JavaScript. वरना तो हो जाता है, people will do it very easily. So how are hidden renders different from web workers? Unlike web workers, hidden renders have access to DOM elements, and the main application can make full use of Electron's Node.js integration. Okay. So you have something like this usually, yes. Now you just need to add is a second hidden browser window which loads your background code. Okay. Okay. So this is worker window which is hidden. Then you create a hidden worker window, new browser window, show as false, web preferences node integration is true. And then you try to load the HTML file. So inter-process communication channels in Electron 2 is not allowed, but you can contact the main process and then pass the contents. Yeah, IPC render. Yes, yes, yes. This is something I've used. Okay, yeah. Yeah, we can do that. Yes. Yeah. So we'll have to send a window message. Then we'll have to catch that. Yeah, app.on ready, async. Yes, definitely. Message from worker, then we'll have to catch it and then we'll have to show something. Right? So yeah, that's it. Uh, um, okay. So we have the payload and then we can use it. Yeah. So I think that's what we can do.
um just give me 1 second, guys. Okay. 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 Okay, all right. So let's do that. Let's do it. Sorry, guys. Sorry. Okay. So we will be listening from a process which will monitor whether there is a change or not. Um. अरे hi प्रथम यार, hi प्रथम. आज I'm a bit distracted. I'm sorry. कैसे हो यार? Been a long time यार. Been a long time. Yeah. How are you? मेरा गला भी बैठा हुआ है. मुझे पानी पीना पड़ेगा, guys. Just give me 1 second. Yeah. Okay. Perfect. So we are ready. Okay. अब डिज़ाइन डिसीजन ये लेना पड़ेगा कि हाउ शुड वी मॉनिटर. ठीक है, ये सोचते हैं इस बारे में. So let's say we have the data stored in a JSON, like JSON dot pass किया, that is good. Okay, that is all, like all good. उसके बाद if there is anything that has changed, ठीक है, वो भी monitor करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. In the JSON file, yes, if anything that changes, ठीक है, okay. Then what we will have to do, we will have to get the message that something has changed, and then we can regenerate. तो अभी के लिए ही करते हैं, ठीक है. So the whole process that we are going to follow is, ठीक है, let me show you. Okay, ये गलत आ गया, ये गलत आ गया, ये इधर आना था. इसकी अब ज़रूरत नहीं है, बाकी सब है ही. ठीक है. हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग मी यार? ओ, वन वॉचिंग, श्योर, ऑफ कोर्स. ठीक है, मेक सेंस. लेट्स गो टू जे स्ट्रीम्स. हाँ यार मोहित. मैंने कहा कि ज़्यादा लोग तो नहीं देख रहे मुझे, लाइक आई बी सरप्राइज, राइट? आई थिंक एक ही देख रहा है, राइट? दैट्स जस्ट यू. कितने लोग देख रहे हैं मुझे दिखाता भी तो नहीं है ये. थ्री पीपल आर वॉचिंग. ठीक है यार, सॉरी गाइज. नो. ऑटो जनरेट HTML डॉट py. के ऑटो जनरेट div. This is the output body. Dev class create container. ऑल राइट, तो अभी क्या करना है? ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट में विल हैव टू मॉनिटर. तो चलो एक चीज़ करते हैं, लेट्स राइट अ जावास्क्रिप्ट फाइल. सैम्पल डॉट जेएस. यार अब जावास्क्रिप्ट. या ओके, सो वी कैन डू दिस. json डॉट पार्स नाइस. लिस्ट यूजर. अरे हाय, व्हाट्सअप ब्रो. अरे मैं इधर ही हूँ, म्यूट करके बैठा हूँ. बस मजे में.
जेसन डॉट पार्स भी नहीं होता ज़िंदगी में। एक तो जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा टाइम तो समझ में नहीं आएगी। अच्छा, इट नीड्स अ टेक्स्ट अ वैलिड जेसन स्ट्रिंग। तो पास करके क्या उखाड़ लिया उसने? कुछ भी करते हैं ये लोग। हाउ डू आई पार्स द स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट माय फ्रेंड? पार्स जेसन फाइल इन जावास्क्रिप्ट। अरे यार, तो कभी कभी 3 मॉनिटर्स भी कम पड़ जाते हैं ब्रो। लाइफ का एक लेसन है। वाओ। सही है। थैंक्स। ये तो दो लगा है अभी, एक पुराने पीसी का निकाल के लगाया तो अभी 2 मॉनिटर हुए मेरे। कितने इंच का है? 24 इंच? नहीं शायद 22 है, पता नहीं। हाँ उसको 20। उसको हाँ वर्टिकल कर ले ट्वेंटी ब्रो। टू ही है। मेरे को कौन सा चैट पढ़ना होता है, कोडिंग ये इसके काम में ही आता है मेरे, तो इसीलिए ऐसा रखा है। वर्टिकल भी काम आएगा तेरे वैसे कोडिंग के लिए, इफ़ यू थिंक अबाउट इट। हम्म। कम ऑन माय फ्रेंड, हम्म। डोंट बी दैट, गो एंड ट्राई। अब पता नहीं वो ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो चलता है कि नहीं वैसा। अरे हाँ। पता कर दिया आड़ा, एक स्क्रीन ऐसा आड़ा आ रहा है और एक सीधा। हाँ, ये तो है। जावास्क्रिप्ट क्या लैंग्वेज है भाई। मस्त। लेट डेटा इक्वल टू दिस जेसन डॉट कोडिंग पार्स। स्टार्ट कर रहे हो तो लोग जावास्क्रिप्ट सीख लो। राइट, सो व्हाट डू वी हैव? लिस्ट यूजर्स डॉट जेसन, ये लोड क्यों नहीं हो रहा है? एरर क्या आ रहा है इसको? अच्छा, ऑफ कोर्स जेसन डेटा डेटा ज़ीरो। ये देखते हैं इसमें। console डॉट लॉग जेसन डेटा। ओके, वाओ। सो आई कैन जस्ट डू जेसन डेटा। हम्म। जेसन डेटा नहीं हो रहा है पार्स, क्यों नहीं हो रहा है यार? एक तो चैट भी नहीं देख रहा हूँ मैं। अच्छा, कोई है ही नहीं तो क्या ही देखूँ मैं। एनीवेज, console डॉट लॉग। अच्छा, पार्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, डेटा तो ऑलरेडी पार्स हो चुका है। ओके, राइट, ओके, कूल। सो अब इसके थ्रू मैं कैसे इटरेट करूँ भाई? जेसन डॉट पार्स की ज़रूरत नहीं है अब अगर तो। यार, ये कूल है यार। इट जस्ट वर्क्स लाइक रिक्वायर कर लो फाइल को। अच्छा, एक सेकंड देना गाइस।
लेट्स गो. ठीक है. सो console.log किया JSON data. Guys, I'm really sorry. My brother called, so I क्या करें, भैया हैं, कुछ भी होगा मैं कट करके भैया की कॉल उठाता हूँ. तो या how do I iterate through a JSON string? That's the point. So when you do require JSON file JavaScript, right? In that case, but ये node में तो available है. Okay. Object.name कर सकते हो, right? Object.name. So if I do JSON dot Kushashwa Ravi Shrimali, let's see if that works. Yeah, it works, right? So it gives you the data for. Okay, perfect. Now how can I iterate through all the keys? Live while you're young. Okay. How do I iterate यार? How is that possible? JSON dot keys कुछ ऐसा होता है क्या? अरे यार ये क्या है? Iterate through JSON data, JSON object, JavaScript. Yeah, I want to see if there's a way. Yes, exactly this. For in, okay. For var key in object. Okay, let's see. For var key in JSON data, if JSON data has own property key var val equal to okay JSON data of key. Okay, देखते हैं क्या देता है ये. ठीक है, चलो करके देखते हैं ये. Let's see what it gives. Okay, perfect. So it gives you नहीं एक second. Yeah, there you go. So it gives you the information that you need, right? Let's only print the keys for now. Val को ignore करते हैं, देखते हैं key क्या आ रहा है. Yeah, key is the names and then you get the data. Perfect, amazing. That's what we want. Outstanding. If JSON data has own property key. Okay, why do I need to check it, by the way? Has own property, what does it do? Okay, no information. ठीक है, कोई बात नहीं. No issues at all. ठीक है, so you got the key here. Key is the username, right? So let's make it as a username. Right, that's the username. Okay, I'm gonna put name as N capital. Camel style, and where val is user data. Okay, instead of val, that gives me more thoda. Okay, let's replace key with username. Okay, and यहाँ पे भी कर देते हैं. अरे 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 username. Perfect. So this is done, right? And यहाँ पे you get user data, right? And let's do node sample.js. This is done. Perfect. ठीक है. अब what we have to do is we have to monitor, right? So let's write a function monitor JSON, right? And how do I, ये simple चलेगा क्या? Okay, ठीक है. We will have to make it asynchronous, right, later on, क्योंकि we don't want it to block us in any way. ठीक है. So monitor JSON will be called with the JSON data. ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ. JSON नहीं, let's say data only. ठीक है. अरे यार हर जगह रिप्लेस करना पड़ रहा है. Should have used this. Okay, कोई बात नहीं. JSON data, right? So this is what we are doing here, and if I try to run this, you see it works. Okay, now the question is what we can do next. Okay, what can we do next? So monitor JSON है अपने पास, data आया, username आया. Now we need to keep a record. Okay, so क्या करेंगे? You will pass the previous JSON data here. Yo sir. अरे सॉरी, वो आरती थी तो इसलिए गया था मैं. क्या बात है, Now I'm back. God level. So what I'm thinking is that we will need to have a previous JSON data. Okay. Can I have a global variable previous JSON data equal to, okay, let
इक्वल टू जेसन कैसे बनाते हैं यार, जेसन डॉट पार्स, एक एम्प्टी कर लेता हूँ, राइट. एंड व्हाट आई वांट टू डू हियर इज नाउ दिस प्रीवियस जेसन डेटा, सो सपोज इसके ये अंदर वो नहीं होता ना ऐसा कुछ स्ट्रिंग वगैरह, किसमें, यानी स्ट्रिंग नंबर नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं रहता टाइप ना इसमें? स्क्रिप्ट नहीं है, या आई थिंक टाइप स्क्रिप्ट में है थोड़ा. hmm so you got the previous json data, ठीक है, जो पहले था एंड जो अब है. ओके, सोचना पड़ेगा. जो पहले था और अब चेंज हो गया, राइट. सो व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू कंपेयर. डिलीट। इजी. या सपोज उस फाइल में कुछ डेटा चेंज हुआ है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल मैच योर ईच यूजर डेटा विद द प्रीवियस यूजर डेटा, राइट. ठीक है, तो कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा, राइट. सो बिफोर डूइंग मॉनिटर जेसन, हाँ ऐसा करेंगे ना, इनिशियलाइज करेंगे जब रीड कर रहे हैं तब. ठीक है, तो जो भी डेटा आया वो प्रीवियस जेसन डेटा में है, मान लो हमारे पास. ठीक है, सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना डू रिक्वायर list users dot json. ठीक है, this is done. Now previous json data and json data, they both are same of course, क्योंकि हम दोनों को एक ही फाइल से रीड कर रहे हैं, right. there is no difference at all. Okay, now what I'm going to do is I'm gonna say, hey, please take this monitor json and have previous data right here, and you check and previous data dot has own property. Hey Shreyansh, Noddy, make way for Noddy. खुल के बोलो हो रे. Hey bro, what's up? This is your first time here? Did we play together yesterday? I think that's how you know me, probably. Yeah? Yes. Welcome, yeah, welcome. Welcome to the stream. This is me doing coding. This is not me being a noob in Counter-Strike. So yeah, hopefully I'll be better here. Thank you so much for coming here. I appreciate that. How are you today? What's up? Let's do this, right? Let's have list user second.json, right? Nice to see. Nice. Okay, perfect. Yeah. Let's make a new file here. So what I'm trying to do is that I'm creating an app which monitors your favorite YouTubers. The whole idea was not to create an app, by the way. I'm not a front-end developer. I'm not an app developer. I'm not a back-end developer. I'm a research engineer. But my idea was to auto-generate the HTML templates using Python. Then I want to convert this into a Rust app. Spoilers. So that's what we have done so far. So if you want, I can show you the demo. So let me know. Yeah. Okay. What I'm going to do is, let's say if I add an item, okay, let's say here is live is true for Nikhil Pandey. What that means is that previous file has changed. Okay, okay. So this will give me a good sense whether this is what I want or not. So I can do for var key in user data, right? I can do user data of key. I can do console.log key comma user data of key. I can do console.log key comma previous user data of key, just to see if it matches. And I can say if user data of key is not equal to previous user data of key, then you do console.log didn't match. Yeah, there you go. So it tells you that something didn't match, right? This is what we want. Perfect, really nice. Okay, so that means that I can just go ahead and do something here. I can get rid of this. Okay,
So you see, it tells you that something didn't match, and what didn't match, I can show you. User data of key. Okay. Yeah. So is life was false. Now it becomes true. That's what didn't match. This is outstanding. This is what we want. We want to know what has changed. And depending on what has changed, we can change the classes. We can change the type. We can change all these things. Okay. For now, what I'm going to do is I'm just going to catch. So I don't even need to do this, right? So I can just check. I can say if user data is not equal to previous user data, I can say, hey, this didn't match. So let's try if it works. Didn't match for username. Right? Okay. No, that doesn't work. Sure. Okay, you can't do that. Okay, you'll have to iterate at least once. Which is kind of कुछ ऐसा गलती आ गया नहीं this is all good, right? ठीक है, that means you can't compare like this. Okay, ठीक है, we'll have to iterate once. मतलब I mean through each. This is okay, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे. Like life में इतना भी कुछ खराब नहीं है. ठीक है. So once you have got, so let's say where has it changed? Has user data changed? Equal to, let's say false, right? Initially it is false, then you can say has user data changed equal to true, and once this is done you can do break. Okay, are kamal hai bhai. So what I can do here is that I can do if has user data changed, right? What I'm gonna do, I'm gonna say please auto generate the file again. Yeah, so let's see how to calling a bash command from JavaScript. So like abhi ke liye this is simple, like execute command, yeah, something like this. How to execute shell command in JavaScript, right? Required child process dot execute karna hai cat.js. Okay, this is something we can do. Okay, that's it. Is it? Okay, ठीक है, कर लेते हैं try. We can do require child process dot execute किया और यहाँ पे लिखा where exec equal to this. It's declared but not used. We will use you now. Don't worry. And let's get rid of this. Let's go do Python 3 auto generate html.py. Khatam. This is nice. Okay, let's also print a command console.log now printing now auto generating data for the users. Okay, but this time I have also understood one thing, that in this auto generate html.py I need the file that I need to use, because I can't always hard code that I want to use list users.json, right? So I hope this works. I think मैंने ऐसा ही code लिखा था. If not, we will see. sys.arg भी डाला था मैंने, which is nice. ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे list user second.json डाल रहा हूँ. ठीक है, because that is a revised one that we have to use. ऐसा करते हैं इसको ना. अरे there you go. Nice यार. क्या चीज़ है NeoVim. If you guys are seeing this, like let's say you want to change this inverted comma from double to from double to single, how can you do that? CS, press double. You see that those are selected. I can do press single. There you go. Such an easy thing. CS, press the inverted comma that you want to replace, then press a new one. Let me do it again. Like suppose you are in between. I do CS, I do single inverted comma, and then I can do double. There you go. It replaced with double. NeoVim is awesome, guys. All right, so this is done. Although I think yeah, okay, perfect. This was coming through a plugin, by the way. It's like not just NeoVim, but from a lot of developers as well. Okay, so console.log, this is done. Now what I want to see is whether this works. So पहले एक बार demo देख लेते हैं, right? So this is how it looks like right now. That Nikhil Pandey is live. एक second, guys. Yeah, so here you see that Nikhil Pandey is offline. Now what I want to see in list users.json is live was false. ठीक है, in list user second.json we have made him live true.
ठीक है. So what I can do is node sample.js. Now it says, see, now auto generating data for the users, but it didn't print me anything. Okay, let's see. No, it didn't change anything. That's something that we didn't expect. Something is going wrong here. Right, क्या क्या गलत हुआ है? एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्या ये चीज़? या मे बी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है. मे बी आई फॉरगॉट कि कॉल कैसे करना है. एग्जिक किया तो है, फंक्शन डाला है इसने, console.log std out. अच्छा ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं. हाँ, मे बी इट डिडंट टेक द फाइल. या दैट इज़ पॉसिबल. सो लेट्स हैव दिस console.log ताकि एटलीस्ट पता चले कि क्या एरर आ रहा है. राइट, सो यू कैन डू फंक्शन एरर std error. राइट, console.log std out प्लस std out. ओके, फॉर नाउ ओके. चलो ठीक है, सब कुछ देख लेते हैं. इसमें आउट को एरर में कन्वर्ट कर देते हैं और इसमें std out को एरर में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, चलो देखते हैं अभी क्या सीन है. नोट करते हैं sample.js. इट डिड गिव मी दिस इज नाइस. ओके, बट इट डिड नॉट चेंज. आई थिंक मैंने हार्ड कोड किया हुआ है कहीं तो. ठीक है, एक ही जगह है यार. देख लेते हैं. python3 autogenerate.py list users second.json. या हार्ड कोड मतलब ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि मैं आई थिंक sys.argv वन ये नहीं कर रहा हूँ. डिड आई फॉरगेट? एक तो ये प्रिंट हो रहा है ना, ये नहीं चाहिए मुझे. या सो इट लुक्स लाइक sys.argv 0 sys.argv 1. मैंने कंडीशन क्या डाली है? अरे यार, माय बैड. Okay guys, so this will work now. Okay, so if I show you this and this time if I do this, there you go, this is changed. Awesome, right? So from JavaScript now we have figured out a way how to monitor two different files and find out अगर कोई difference है and then update. Right, this is all good. अभी एक only stopping thing is कि हमें ये figure out करना है that sample.js में इफ डेटा हैज ओन प्रॉपर्टी. ठीक है, अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, दो फाइल्स रीड कर रहे हैं. राइट, लिस्ट यूजर्स अंडरस्कोर सेकंड डॉट जेसन, लिस्ट यूजर्स डॉट जेसन. वट आई वॉन्ट टू डू इज आई वॉन्ट टू सी कि हाँ भाई लिस्ट यूजर्स डॉट जेसन में ये था. ठीक है, इट शुड बी ईजियर. तो वट आई कैन डू हियर इज आई कैन जस्ट डू वेर एग्जिट दिस इज ऑल गुड, दिस इज ऑल गुड. ठीक है, ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको कॉपी करते हैं. इसको अपन डालते हैं मेन डॉट जे एस में अभी के लिए. मेन डॉट जे एस कहाँ पे डालेंगे हम लोग? ऐप डॉट ऑन रेडी ना, आई थिंक समथिंग लाइक दिस. राइट, अच्छा हाँ, whenever you have activated, right, you will store the previous data somewhere. ठीक है, तो what I can do is I can create a const previous data equal to, नहीं const नहीं चाहिए मैं. अच्छा by the way है ना यहाँ पे. ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये चीज़. ठीक है, like let's not have it as const, let's have let previous data equal to null. ठीक है, फॉर नाउ. या फिर रीड कर लेते हैं ना डायरेक्ट, क्या ही जाता है. नहीं, आई वांट इट टू बी अ ग्लोबल वेरिएबल यार. आई डोंट नो. या इवन इफ यू डोंट हैव, व्हाट्स द प्रॉब्लम? या ठीक है, हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. where execute रहेगा, monitor json is a function, so no issues with there. We don't need to call it right now. So whenever you have activate, right, ये रेडी कर सकते हैं ना. previous data equal to let require list users dot json. Right, so this will give you whatever data that existed before, right, whenever you have just started. So this is what we are going to record. Okay, and what, like after this, what we are going to do, we can do app dot on ready function. But yeah, this needs to be, I'm a bit confused here. How can I have a function which is called infinite times, right? Like it's called every time
like let's say every 1 second, every 2 second or something like that. That's what I need. कहाँ था यार वो? यहाँ यहीं पे था, राइट? अरे बैक जाओ भाई, ऐसे कैसे? या समथिंग लाइक दिस. विंडो डॉट लोड फाइल, इसने न्यू विंडो बनाया, ठीक है, दैट इज़ नॉट माई कंसर्न. हाँ, आईपीसी कैसे कर रहा है ये? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन गाइस बाय द वे. सो लेट मैसेज टू यूआई डॉट सेंड. ठीक है, कर लेंगे इसको अपन और अच्छे से करेंगे. एप डॉट ऑन रेडी असिंक. ओके, या ipc main dot on message from worker, right? Whenever you get the message, then you do it. So this is what we want. So we want to have this async function here, async here, and have this data here, right? Okay, so every time I'm reading it, ठीक है, इसको तो बनाना पड़ेगा, ग्लोबल बनाना पड़ेगा, right? I don't have any option. और ये प्रीवियस डेटा कहाँ का यूज़ हो रहा है? या यहाँ पे ना. सो इफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, अब क्या करेंगे? मॉनिटर जेसन करेंगे, राइट? And I'll do require list users.json again, and I'll pass the previous data. Right? What that means is every time I'm calling this function, I'm always reading the list users.json as the first argument, but I'm not reading the second argument. Okay? And now I'll go here and like whenever there's a change, right? I'll just say has user data changed equal to true. I'll say previous. Okay, I need to return as well. Yeah, so what I can do here is once this is executed, I can do return data, right? I can go down, I can monitor JSON, right? Here I can do previous data equal to this. Okay, it needs to return in all cases, by the way. So in case this is not true, then you just do return previous data, whatever that existed before. So there's no issues. Cool, will this work? I think we are done. I don't know, we'll see. Let's see. Okay, so right now, okay, let me put everything into. Okay, guys, are you, whoever is here, okay, take a look. So what we have is Nikhil Pandey is offline. Sure? Perfect. Okay, let's go and change the file. Let's go and change the file and see whether something changes. If I make it true, ये क्या हो रहा है? Maybe it's trying to read it. Okay. So I think the problem is that it's trying to read it, right? यहाँ पे अगर देखेंगे अभी निखिल पांडे इज लाइक फॉल्स है. No, it has, I think it's missing something over here. Yeah, I think something is going wrong. Okay, wait. Let me go to main.js. Here we are doing right. Let's do console.log. Monitoring. Okay. And let's go here. अच्छा async हो रहा है यार एक तो ये. ठीक है. Monitor JSON में जाते हैं. Hey, hi अनन्या यार. Hi, what's up यार? It's been a long day. How have you been? कैसे हो तुम? सब बढ़िया? It's been a long time यार. Yeah. Good to see you all. I'm just trying to make an app आज. YouTube monitoring app. मस्त है. अच्छा, सो दिक्कत तो रेंडर नहीं हो रहा है ना वापस, राइट? दैट्स द प्रॉब्लम बिकॉज यू आर नॉट लोडिंग द फाइल अगेन. मे बी इज ट्राइंग टू. Okay, so what I need to do is I can just do main.main app.ready, right? I can do main window dot load file again. Yeah.
ये सब बढ़िया। जेई प्रिपरेशन वेरी हैक्टिक। यस 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 यार, कितना ही भाग लो इस चीज़ से कि नहीं, जेई इज लाइक एंड ऑल ऑफ दैट, लाइक इट्स वेरी हैक्टिक। यस, कुडंट एग्री मोर यार, बहुत हैक्टिक है। तो के कहाँ हो अभी तुम? लाइक आर यू इन कोटा, और या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या फिर कहीं और हो? मतलब मे बी आर यू इन लाइक डूइंग कोचिंग और समथिंग? कौन सी क्लास में आ गए ब्रो? बड़े हो गया तुम लोग तो। अच्छा दिल्ली में हो फिर जी, नाइस यार, नाइस, शाबाश, गुड लक यार। लाइक आर यू फ्रॉम दिल्ली, और लाइक इज इट लाइक न्यू टू यू? कोई दिक्कत तो नहीं होती है? दिल्ली, या ओके, ट्वेल्थ में हो, नाइस, गुड लक यार, गुड लक, हैव फन। और आई जस्ट हैव टू से दैट लाइक, मतलब फन मतलब ऑफ कोर्स पढ़ाई करते करते, ऐसा नहीं कि मस्ती में फन करने को कह रहा हूँ। नाइस, गुड लक यार, गुड लक, होप इट टर्न्स आउट वेल फॉर यू। राइट, अभी मेरा ऐप नहीं चल रहा है, बट हाँ, इसको सही करते हैं अभी। क्या दिक्कत हो रही है यार इसको? मैं ही कुछ गलती कर रहा हूँ, प्रीटी श्योर। मेन फाइल डॉट लोड फाइल, ठीक है, मेन विंडो डॉट लोड फाइल, कांट आई जस्ट डू मेन विंडो डॉट, अरे यार एक तो ये अलग ही दिक्कत है। प्रीवियस डेटा लोड फाइल index डॉट एच टी एम एल, सो वी आर ऑलवेज लोडिंग async, nahin, that's not done. Now this needs to be async, so this app dot monitor json list users dot json को रीड किया, चेंज किया, ओ बाप रे। हम्म, कुछ तो प्रिंट करना पड़ेगा, कहीं तो प्रिंट कर रहा हूँ ऑलरेडी जो मुझे नहीं प्रिंट करना चाहिए, या आई डोंट वांट एस टी डी आउट एंड ऑल ऑफ दिस अभी के लिए, दिस इज ऑल कूल। नाउ ऑटो जनरेटिंग द यूजर, ओके, लेट्स सी। हम्म, या अभी तो इसने कुछ कैच नहीं किया है क्योंकि इट डिडंट फाइंड एनी डिफरेंसेस, सो इसलिए यहाँ पे कोई मैसेज नहीं है। बट इफ आई वुड हैव चेंज समथिंग, let's put it here. If I will go auto generate templates, if I go to list users second.json, right, and let's have last live is live is false को true कर देते हैं, right, and if I do list users second.json को मैं list users.json कर देता हूँ, right, it doesn't even catch it, right? हाँ तो वो नहीं कर रहा है रेडी में, वो नहीं कर रहा है, आई थिंक रेडी only runs once. Does it even run? ओ हाँ, does it even run? No, right? एक तो यार टीमक्स हटाओ अभी, मैं कोई स्क्रॉल भी नहीं कर सकता ढंग से, इरिटेटिंग थिंग। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे? npm, सी डिडंट इवन रन द कंपैरिजन स्क्रिप्ट, क्यों? क्यों भाई, व्हाई डिड यू नॉट रन दैट स्क्रिप्ट? console डॉट लॉग मॉनिटरिंग क्यों नहीं रन किया इसने? हम्म, देखते हैं। नहीं, इवेंट लिस्ट नहीं बनाना पड़ेगा, राइट, और कोई ऑप्शन नहीं है? ट्रिगर द इवेंट फ्रॉम द रेंडर प्रोसेस, ये यहाँ पे नहीं चाहिए ना लेकिन मुझे भाई, अच्छा, या आई कैन हैव इट समवेयर एल्स, यस, ipc data डॉट सेंड, या
बट ये लोग कैच कहाँ कर रहे हैं? It always listens to it, right? That's the whole point of it. So we can do that. यार आज कितना टाइम हो गया स्ट्रीम करते हुए? I'm a bit tired. आईपीसी रेंडरिंग करनी पड़ेगी. ठीक है. कल करते हैं गाइस. आज थक गया हूँ मैं. थोड़ा इतना अच्छा भी मूड नहीं है. तो हाँ, कल करते हैं. ठीक है. Thank you for the one subscriber who came and subscribed, and thank you for 7 likes guys. I really appreciate it. ठीक है. Um, नहीं अनन्या, आई एम नॉट गोइंग फॉर मास्टर्स, आई एम वर्किंग राइट नाउ. बस ये तो आज थोड़ा टाइम नाइस। टाइम मिल गया तो कर लिया. आई यो। कंप्लीटेड माई बैचलर्स इन 2020. या हाँ भाई मोहित, व्हाट्सअप. थक गया यार आज मैं. कुछ नहीं। नींद आ रही है. सुना। बैकग्राउंड में मेरा काम कर रहा था। तेरा तो जॉब है आज यार, बाप रे. अरे ऑफ है। तेरा? नहीं नहीं, मेरा कैसे ऑफ। हमारा ऑफ है यार. सही है। मंडे को ऑफ रहता है आपके? सही है। नहीं नहीं, मंडे को ऐसे यार, मंडे ऑफ नहीं है. नहीं, ऐसे मीटिंग्स तो है आज, लाइक ऐसा नहीं है. ऑफ के बाद भी कभी कभी काम आ जाता है. चलो गाइज, ऑल राइट, आई विल लीव गाइज. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. श्रेयांश, अनन्या, मोहित, तुल, निखिल, प्रथम, इनके साथ से 6 लोग ये थे. 6 ने लाइक कर दिया, एक मैंने कर दिया, 7 हो गए. नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस. ठीक है. ऑल राइट एवरीवन, टेक केयर यार. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. बाय बाय. सी या. हाँ, स्ट्रीम एंड कैसे करते हैं? दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट. एंड लाइव करना पड़ेगा ना? ठीक है, एंड स्ट्रीम. यस। यस, ओके. बाय गाइज.